y1 by 2. Okay. Now, in this equation, y square equals to 4ax. I have y square and x now. So I replace y square by y1. Y1 is equals to 4a times. The value of x can be replace it as a x plus x1 by 2. So I get y1 is equals to 2a times x plus x1. This is the equation of a tangent. This is the equation of a tangent. Equation of a tangent to the parabola. To the parabola. Y square is equals to 4x at a point x1, y1 on it. Okay. This is called as the equation of a tangent. Now, we are going to learn about one more condition. Very simple one. This is called as a condition of a tangency. The next point is condition of tangency. Condition of tangency. What does it means? If I say let y is equals to mx plus c. This is the equation of a straight line. Correct now? We seen it in a straight line. Y is equals to mx plus c. Be the tangent. Be the tangent to the parabola. To the parabola. Y square is equals to 4ax. To the parabola y square is equals to 4x. If and only if and only if the condition is very simple. The condition says that a by m is equals to c. Instead of that, we have to learn like that a is equal to cm. A is equals to cm. We have to learn this. Okay, not this one. A by m is equals to c. Otherwise, I say a is equal to cm. Okay, this one is a very simple to remember that. So we cannot remember this. We remember this one. A is equal to cm. That means if the value of a c is equals to a by m, where a is the for a is the length of lattice rectum of that parabola and m is the slope of the tangent, then the value of y-intercept of that equation must be a by m. That is equation of a tangent. Equation of a tangent is y is equals to mx plus a by m. This is the equation. Is there any doubt anyone have? I said two conditions today. The first one is that the equation of a tangent to the parabola at a point x1 y1 on it, and the second condition is the condition of a tangency, where we have to find the value of a c, where c is the y-intercept. The condition of a tangency says that a by m is equals to c, then that line is the equation of a tangent to that parabola. Okay, it's moving forward now. Now, in a first case where we learned about the equation of a tangent at a point, that I'm repeating it here again. Equation of a tangent, equation of a tangent, equation of a tangent at a point on the parabola, on the parabola, at a point we say here x1, y1. Just a minute. At a point, at a point x1, y1 on the parabola y square is equals to 4ax in parametric form. In parametric form.
If we see y square equals to 4ax has the parametric equation x is equals to 80 square and y is equals to 280. So I am writing here the equation of the parabola, sorry, the equation of a tangent. This is the equation of a tangent. Equation of a tangent is y1 2a times x plus x1. So I'm replacing it y into 2at is equals to 2a times x plus 8t square. This 2a get cancelled. So remaining with yt is equals to x plus 8t square. This equation is called as the equation of a tangent in parametric form. The equation of a tangent in parametric form. Okay, we've seen the three equations. The first one is in the point form. The second one is the slope form. Okay, and the third one is in the parametric form. These are the three important equations which will ask in the exams. Okay, let's see. Now we are moving forward. Now we are going to learn about the next conic called as a ellipse. The next conic is a ellipse. Okay, the definition of a ellipse is very simple one. Okay, what it says, the sum of distances. Listen carefully. What is the definition? The sum of distances from two fixed points from two fixed points. अच्छा, हम लोगों ने फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला था? फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट. व्हाट वी से अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट? Fixed point is called as a focus. Correct na? From two fixed points remains constant. Remains constant. Okay. The sum of distances from two fixed points remains constant. Okay. Now I draw one ellipse and let you know about the definition. What it says. If this is the ellipse. Okay. Sorry. And it has two fixed points. Say S dash. Here I take a point P, here I take a point Q. If I find the distance S dash P and SP, and similarly S dash Q and SQ, it says that SP plus S dash P is equal to SQ plus S dash Q. The sum of distances from the two fixed points remains constant. This is the definition of the ellipse. This is the definition of the ellipse. Okay. This is the sum of the this is the definition of the ellipse. Let we go forward. Next, now we are going to find the equation of a standard ellipse. We are going to find the equation standard ellipse. Okay, we are going to learn about the standard ellipse. There are too many conditions in the standard ellipse. What it says, it has two axes. One is called as a major axis and another one is called as a minor axis. Let me draw the diagram first. First, I draw the ellipse again. Okay, let's see. This is the ellipse. Okay, this is the x-axis, x dash. This is the y dash, and this is the origin O. ठीक है? Okay.
Now it has two axes. One is x-axis and another one is y-axis. This x-axis is called as the major axis when the ellipse is horizontal. The ellipse is horizontal. Okay. That means its vertical distance is less than the the horizontal distance is greater than its vertical distance of that ellipse. Now it has two fixed points. Now it has two fixed points. I say it is S dash and S. That means it has two focus together. It called as a foci. Okay, two focus together called as a foci. And another thing is that it has two directrices it has. Okay, the one directrix is at the left side, and the second directrix as the it has the right side. This is one directrix, and this is also one directrix. Okay. Okay. Now this is acha. See now, this is the axis of ellipse, which is nothing but major axis, and this is directrix. This one is also called as a directrix. Okay. So this point is called as a where the conic and the axis meets. We called as a vertex. So this one is also vertex, and this one is also vertex. These are the two vertices. If I say the vertex is at a comma 0 and minus a comma 0, a comma 0 and minus a comma 0, then its focus is at a e comma 0 and minus a e comma 0, where E is the eccentricity of that ellipse. And the equation of the directrix is here x is equals to a by E, and here x is equals to minus a by E. Okay, these are the equation of the directrix. These are the equation of a directrix. X is equals to a by E and x is equals to minus a by E. It has two axes. One is the major axis and another one is the minor axis. The major axis is along the x-axis and the minor axis is along the y-axis. Okay. Now you seen it. You seen it that the length of major axis is 2a. If I say these 2 points as a 0 comma b and 0 comma minus b, 0 comma b and 0 comma minus b. So I'm writing all the things. So the equation is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. This is the equation of the ellipse. Okay, x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. This is the equation of the ellipse. In this ellipse, we see all the things. Okay. One more thing you have to remember that I say that if in the definition that the sum of distances from the two fixed points remain constant. Now, here if I take any point, say P, if I take any point P on that ellipse, then here the sum of the distances SP plus S dash P, SP plus S dash P is equals to 2A, that is length of major axis, we say it. Okay, sp plus s dash p is equals to 2a, then we called it as a length of major axis. Okay, now moving further, we see one more ellipse is there, here.
The thing is that the A should be greater than B. The A should be greater than B. So the eccentricity of that ellipse is given as E is equals to root of root of 1 minus B square upon A square. 1 minus B square upon A square, square root of. Otherwise, you have to remember like that E square is equals to 1 minus B square upon A square, like that only. E square is equals to 1 minus B square upon A square. You see in it, we are subtracting from the 1. So its eccentricity is always less than 1. Its eccentricity is always less than 1. Where A is greater and B is smaller, na? A is greater and B is smaller. Okay. Now, the this equation is called as a, listen carefully. This is a major axis, this is a minor axis, and this origin is called as the center of the ellipse. Center of the ellipse. Okay. Now this is horizontal again. Now we draw a diagram for vertical as well. Vertical. For vertical, it look like the ellipse should be like this. This. Okay. This is the vertical ellipse. In that case, the major axis is along the y-axis. The major axis is along the y-axis. Okay, this is the vertex, say 0 comma b and 0 comma minus b, and this is a comma 0 and minus a comma 0. It has two focus again, s dash. S has 0 comma be, and s dash is 0 comma minus be, and here is directrix 1, and it is also there one directrix where y is equals to b by e, and here y is equals to minus b by e, like that only. In that case, the b is greater than a. The b is greater than a, where eccentricity is given as e square is equals to 1 minus a square upon b square. 1 minus a square upon b square. This is the eccentricity of that ellipse. Eccentricity of that ellipse. E square is equals to 1 minus a square upon b square. Now, moving forward, if I say here sp plus s dash at p, which is equals to 2b, I say already that the sum of distances from two fixed points remain constant, and in ellipse it is equal to the length of major axis. It is equal to the length of major axis. Okay, let's see. Now we are going to learn about all the things about that. We draw a table for the both the ellipse. Okay, let's see what should we know about these.
Now standard equation is the first ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, where a is greater than b. And the second equation is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, where b is greater than a. These two ellipses we are going to learn. The first one, center, what we have to find? Its center, then axis of symmetry, next vertices, where it has a vertices, major axis and major axis and minor axis, length of major axis, length of major axis, and length of minor axis, length of minor axis. Next is eccentricity, foci, where it has a foci, distance between foci, distance between foci, and the next is equation of a directrix, equation of directrix, end points of latus rectum, length of latus rectum, parametric form, equation of a tangent at a vertex, equation of tangent at vertex, sum of focal distances, sum of focal distances of a point P x1 y1, x1 y1 on it. Let's see these points we are going to see here. The first one, the center of the first ellipse is center 0 comma 0 origin itself, and for the second one is again origin 0 comma 0. The next is axis of symmetry, both x-axis and y-axis, x-axis and y-axis. See now here, if I say the symmetriness, it is symmetrical about the x-axis as well as the y-axis, both axes, and the vertical is also again both axes. Symmetric axis is both axes. Okay. Vertices. The first one has the vertices at a comma 0 and minus a comma 0, and 0 comma b and 0 comma minus b. Here again same thing. The vertices are at at a comma 0 minus a comma 0, 0 comma b, 0 comma minus b. Major axis is here in this case x axis, and minor axis is y axis in horizontal, and in vertical the major axis is y axis
and the minor axis is x-axis. Length of major axis is 2a and length of minor axis is 2b. Here it is different, 2b and 2a. 2b and 2a. Eccentricity has the formula e square is equals to 1 minus b square upon a square. Here the formula for the eccentricity is 1 minus a square upon b square. Here the foci, two focuses are there. The first one is S at a e comma 0 and second one S dash minus a e comma 0. In this case, S is 0 comma b e and S dash is 0 comma minus b e. Distance between foci is 2AE here and here it is 2BE. Equation of a directrice is x is equals to A upon E and x is equals to minus A upon E. X is equals to A upon E and x is equals to minus A upon E. Here y is equals to B upon E and y is equals to minus b upon e. There are two equation of a directrix. Actually, it has two directrices. End points of lattice rectum. End points of lattice rectum. The first one has plus minus ae plus minus ae comma b square upon a plus minus ae comma plus minus b square upon a, as it has two focus, sorry, two directrices na. So this one is the this one is the latus rectum and this one is also latus rectum. So it has ae comma b square upon a here, a comma b square upon a here. So here a comma minus b square upon a, that one, and here minus ae comma b square upon a and minus a comma minus b square upon a. These are the endpoints. Four endpoints are there. Both are positive, both are negative, one positive, one negative, and one negative, one positive, like that. So I'm writing it in one frame only. The next one here, plus minus a square upon b, comma plus minus be. These are the endpoints. Plus minus a square upon b, comma plus minus be. The length of latus rectum for the first one is 2b square upon a, and for the second one it is 2a square upon b. Parametric form of the first one is equals to x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. And the second one has the same again, x is equals to a cos theta, y is equals to b sin theta. Equation of a tangent at vertex are x is equals to a or x is equals to minus a and y is equals to b and y is equals to minus b. Vertices set as a 4. So like that only. Here again the same thing, x is equals to a, x is equals to minus a, y is equals to b, y is equals to minus b. Sum of distances of a point p x1 y1 on it is here 2a, sorry it is 2a and it is 2b. 2b. That means the length of major axis we are taking it. The sum of distances of any point on it is always remains constant, and it is equal to the length of major axis. Length of major axis. Once you see all the points, if you have any doubt on any point, let me know. These are the equations. This is the standard equation of the ellipse. Okay. We see in it the eccentricity formula for that is e square is equals to 1 minus b square upon a square, where
B is less than A. That means the major axis is along the x-axis and the minor axis is along the y-axis. Okay. And the vertical ellipse is like that, where the major axis is along the y-axis and the minor axis is along the x-axis. And in that case, the value of a B is greater than A. So the formula for the eccentricity is E square is equals to 1 minus A square upon B square. And the sum of the focal distances from any point on that ellipse is equals to 2B. I wrote here all the necessary conditions for that standard equation I wrote, and for them what we should know already, that the things I wrote here. The first one is the center of for the both the ellipses at the origin 0 comma 0. Axis of symmetries are both the axes. Vertices, the first ellipse has the four vertices and the second one has also four vertices. Major axis, minor axis, length of major, minor, eccentricity, foci, distance between the foci, equation of a directrix, end points of latus rectum and length of latus rectum, parametric form, equation of a tangent at a vertex and the sum of focal distances. Is there any doubt you people have? Yes. Anyone? Okay. In that, if the value of A and B are equal, this is a very important note. The note is like that. Note, if A is equals to B, then the ellipse becomes the circle. The ellipse become the circle. If A is equals to B, the ellipse becomes the circle. Okay. Now, further, I have one question for you people. The first question number one. Find eccentricity, eccentricity for the ellipse x square upon 25 plus y square upon 9 equals to 1. Find it. X square upon 25 plus y square upon 9 equals to 1. Find the equation of find the value of eccentricity. Find the value of eccentricity. Yes, anyone got the answer? Sir, 4 by 3. 4 by 3. 3. No, no, not 3. 4 by Yes. 3 नहीं. 4 by 3 नहीं है. Check Sir, करिए. it is 4 by 3 only. Sorry? 4 by 3 only. 4 by 3. Yes, sir. No, 4 by E is 4 equals to by under 3 root means 2 it's minus. 4 by 3 means it is greater than 1, na? And what I'm saying, the eccentricity of the ellipse is always less than 1. Then how? Sir, then minus 4 by 3. Oh, eccentricity cannot be negative. Acha, what is the value of a square here? 25. Correct, na? What is the value of b square here? 9. Okay, and I know that a is greater than b. Correct? Now, to find the eccentricity, I use the formula e square is equals to 1 minus b square upon a square, na? So substitute the values 1 minus 9 upon 25. If I make basis equal 25 minus 9 upon 25, correct?
So it becomes 16 upon 25 e square. So this implies that e is equals to 4 upon 5. Yes or not? E is equals to 4 upon 5. Correct? Acha, for that, what is the length of major axis? What is the length of major axis? 10. 10. And what is the length of minor axis? 6. 6. Acha, do one thing. For that, you people have to find almost first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Up to the length of latus rectum, you have to find all the things. Find it for this ellipse. For that ellipse, you have to find up to the length of latus rectum, all these things you have to find it. I will ask you people about that. Find it, do it fast. Do it. Sir, 3.6. What is the 3.6? Length of latest rectum. Length of latus rectum is 2.6. 2b square upon a, na? 2 Sir, into 3.6. 9 upon 5, na? 3.6. It is 3.6. Acha, find it all these things. What I'm saying, you have to find the center axis of symmetry, vertices, major axis, minor axis, length of major axis, length of minor axis, eccentricity, foci, distance between the foci, equation of a directrice, endpoints of latus rectum, and length of latus rectum. These things you have to find. Yes. Let me know. What is the center for that ellipse? 0, 0, sir. 0, 0. Axis of symmetry are both axes again, x-axis and y-axis. Correct. Yes, sir. Vertices are vertices are Sir, 5, comma 0, minus 5, comma 0. and 0 comma 3 3 and 0 comma 0, comma minus 0. minus 3. Major axis is x-axis Yes, and sir. the minor axis is y-axis only. Length of major axis is 10 and length of minor axis is 6. hmm, 6. hmm. And eccentricity we already find it 4 by 5 na. Acha, what is the first Yes. foci? Foci 4, comma 0, minus 4, 0 comma 0. minus 4 comma 0. Distance between the foci Sir, 8. 8. Equation of a directrice Sir, 25, comma 25 upon 4. plus minus na both the values. Okay. Yes. Okay, let's see.
Now we are going to learn today a general aptitude for human relations. Sir, we are not getting the PDF, sir. Sorry, yesterday I forgot. Today I will send it all the PDFs together. Okay. Sir, please try to upload on the drive. Acha, okay. Okay. Mm, just a minute. Okay. In human relations, na, we have to think like that. We have a generation gap. Okay. Generation gap. How we consider it? For simplify it, what I say, whenever it is male there, a person is a male, then I will take as a plus. If the person is a female, then we'll take it as a minus. For the generation gap, we add, see, if a person is there, I go back, then I say minus one. If I go forward, then it is a plus one. Back means like that, na. Uh, Back means the it is asking, it is telling about the father, grandfather, and all the things. Here you get father, mother, okay, and grandfather, grandmother, maternal uncle, and so on. Maternal grandfather, and all these things which are above the person, we take it as a minus one. And after that, son, daughter are all at the plus point. Okay. And the siblings, we write them at equal point. Okay. These three major rules now we get the all the relations correctly. Okay, all the relations correctly. To find any relation, we have to use these three relations like that. The first thing is, if I'm telling about its father, then we go for the first above that point. And if it is telling about the son or daughter, we write it at the below the point. And if it is telling about the siblings, then we take it as a similar point. Okay, let's say we start. We see the questions. Just a moment. I will share the PDF in a moment. Okay, just a moment.
Let's see. I'm finding the PDF. Just a minute. I think it is ready. Yes, it is ready. Just here we have downloads. Yeah. Okay, let's start now. The first question. Read it carefully and answer the best answer for each question. Yes, what is the first answer? Aunt. Hmm? Option C. No, no. Option C is not the answer. See, read the carefully. Who is saying and what is the saying? Pointing to a man, a woman said, his mother. See carefully, huh? Her A sister. man, a man is there. A man is there. For pointing this, woman is said, his mother. His mother is the only daughter. She is the only daughter of her mother. So her mother's daughter is she herself, and he is her mother. So the woman related to the man is the mother, no? Not the sister. Read the carefully. Read it carefully. What we are saying, a mother. Got it now? What I'm saying, her mother, his mother is the only daughter of my mother. His mother is the only daughter of my mother. Okay, let's see the next question. Question number two. P is the brother of Q, R is the sister of P, S is the father of R, and T is the mother of S. How is P related to T? Find it. It is very simple one.
Yes, very simple one. What is the answer? P is the brother of a Q. R is the sister of a P. S is the father of R, and T is the mother of S. How is P related to T? Very simple one. Do it. See how we are doing here. They are nephew, sorry, they are siblings now. P is a brother of Q, so P and Q are related like this. R is the sister of P, so the it is negative and this is positive. Okay. Next, S is the father of R, so S is the father, and T is the mother of S. Here T, she is the mother. The grandson. How The is grand. P related to T? Na, we know that. We say about the P, na, so P is the grandson of T. Yes, P is the grandson of a T. So these questions are mixed one. Okay. Now I will share one more PDF. Just a moment. Yes, again the first question. Pointing to a photograph, a man said, I have no brother and sister, but that man's father is my father's son. Who is the person in the photograph? Hmm. Yes, what is the difficulty level for that? It is a very simple one. Think it. What is the answer? Do it fast. Yes. Pointing to a photograph, a man said, I have no brothers and sisters, but that man's father is my father's son. Okay. Huh? Cousin option A. Huh, he is the son. See na, what he is saying, a man pointing to a photograph. Okay, that photograph is P. Let's see. Photograph. Okay. His father, his father is the only son of her, the man who is saying its father. So this is the relation between the father and son. So his son. Second one. A woman introduces a man is the son of brother of her mother. How is the man related to the woman? Yes. Woman has a mother, his brother,
and his son. Now, how they are related? Yes, it's very simple one. I said only when they are in a parallel case, then they are cousins, na? Yes or no? मामा का बेटा है ये, बराबर ना? मामा का बेटा क्या लगेगा? कजिन लगेगा ना? चलो, थर्ड वन. Pointing to a girl, Raju said, "She is the only daughter of my father's only daughter." How is Raju related to the girl? She is the only daughter of my father's only daughter. Third one. She is the only daughter of my father's only daughter. Uncle. Pointing to a Option B. girl. Option? D. Pointing to a girl, Raju said, "She's the only daughter of my father's only daughter." Acha, that means Raju has father. She has only daughter, and she is the only daughter. How it is possible? Some mistake is there, na? She is the only daughter of my father's only daughter is the mistake here. I think so. Raju, Raju is not the female, na? This question is wrong actually. The question is itself wrong one. The fourth one, yes, the fourth one. Introducing a man to her husband, woman said, "His brother's father is the only son of my grandfather." Wow. See, do it, do it. A woman said his brother's father is the only son of my grandfather. His brother's father is the only son of my grandfather. How is the woman related to this man? Acha, let's see. It is a very simple one. How we tackle it? Very simple one. What the woman says is very important, na? So we say as a woman, what she is saying to this man, okay, this man's brother, okay, brother's father is the only son of is the only son of means its father, na? So this woman's father, this is the grandfather.
He, the father is the grandfather. It is the only son. Only son. That means she is not the related to this directly. Okay, no, not to the directly this. Then how they are related to this man? Yes, his brother's father is the only son of my grandfather. So they are related as a sister, na, because he also has a grandfather and they also have this person as a grandfather. So they are related as a sister, na. Got it? She is the sister. Correct, na? Okay, let's moving forward. Fifth one. If A is the mother of B and A, na? A is mother, so I'm writing it as the upward side. Okay, A is the mother, B is the. I don't know either she is a son or daughter, but A is the mother of B, and C is the father of A, and C is the father of A. Then how is it related to C to B? C to B. C is the grandfather, na? Simple one, grandfather. Now next one. Pointing to a girl, Amit said, "She is the daughter of the only son of my father." That's a very simple one. How is the girl related to Amit? Read the carefully. Pointing to a girl, Amit said, "She is the daughter of the only son of my father." Yes. They see it. It is a very simple one. What is the Daughter. answer? Daughter. Yes. Amit is itself is the son of that man. Na? Amit is itself the man. Amit is itself the son of that man, and her daughter is the that girl only. So the answer is daughter. Seventh one. A man said to a woman, "Your husband's sister is my mother." Your husband's sister is my mother. How is the man related to the woman? Read it carefully. A man said to a woman, "Your husband's sister is my mother." Nephew. Uh, uh, Nephew. nephew. That woman's husband's and her sister. Correct, nephew. Next, A is B's sister, C is B's mother's, D is C's father, and E is D's mother. How is A related to D? Yes. Take the generation gap, write it on the paper, then you will get the answer easily.
Yes. A is B's sister. C is B's mother. D is C's father. And E is D's mother. How is A related to D? See, A is B's sister, na. So how we are writing A and B together, na? A is a sister. So negative I am taking. C is B's mother. So C is again minus. Correct. And D is C's father. So we need the relation between the A and D, na? Simple. What is the relation? Yes. Granddaughter. Granddaughter. But if it is asked about the E, then it is a great granddaughter, na? Okay, let's see. Question number 9. Introducing a girl, Ravi said she is the daughter of the only son of my father's wife. Again, simple one. Yes, she is the daughter of the only son of my father's wife. How is the girl related to Ravi? Here it is only the answer. My father's wife Daughter. means it is a Ravi only, and it's Ravi's daughter, na? So the daughter. Uh, 10th one. Woman said this man's son's sister. How is the woman related to the man? Oh, very simple one. क्या आएगा? सोचो. कितना सिंपल है देखो. दिस मैन सन सिस्टर इज माय डॉटर. वो उसकी बेटी है. उसके भाई के, उस मतलब उसके उस आदमी के बच्चे की. तो वो आदमी उसका हस्बैंड हो गया ना. तो वुमन इज रिलेटेड एज अ वाइफ. Read it carefully, then only you will get the answer correct. Okay. This man's son's sister is my daughter. So the man is the father of that son and sister, means that son and that daughter, and she also has the daughter. So they are related as a husband and wife. Next, question number 11. Pointing to a lady, a man said, okay, she is the daughter of.
my wife's only son. How is the lady related to the man? Yes, she is the daughter of my wife's only son. Sir, granddaughter. Granddaughter. Very good. Next one. A man said to a woman, the only son of your mother, the only son of your mother is my father. How is woman related to the man? Yes. Sir, grandmother. A man said to woman, the only son of your mother. What is the answer? Grand? Grandmother, sir. No, no. Read it carefully. A man said to a woman, the only son of your mother is my father. So that man, okay, that man's father, that's man father is the only son of your mother, that lady's mother. So how is the woman related to the man? Correct, correct. Grandmother, na? Yes, yes. Sorry. Next, 13th one, huh? Pointing to a man, yes, pointing to a man, woman said, he is the son of my father's only son. How is the man related to the woman? He is the son of my father's only son. That means she has the daughter, the son is the only one. So he's a nephew, na? Nephew only. See na, the man is the son of father's father of that. Yes, sir, nephew. Uh, correct, na? He's a nephew. Yes, sir, nephew. Correct, it is a nephew. Okay, just a minute, huh? Okay, last question. 14th one. If A is the daughter of B and B is the brother of C, how is A related to C? A is the daughter Sir, of B and niece. B is the niece. Correct, niece. Okay, I will share the PDF today, all the PDFs with you people. Okay, go through it, and you have tomorrow exam, I think so. Yes, na? Okay, let's see. Sir, please make a co-host to the Anis Defense Career Institute, ADC. Hello.
अच्छा, तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो, 15th वाला। ये वाला सॉल्व करो, 15th वाला। ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए। हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डॉटर। ए इज द फादर ऑफ ई। ओके, बी इज देयर, ए इज देयर, but B is not the son of A. Then it is a B is related to A. Barabar. Correct. Next. Okay, let's see. We will share the PDF to you people. Then solve it. Okay. ठीक है sir. Thank you. Hello, good morning, everyone. Good morning. Good morning, बच्चों. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning. Okay. बहुत लेट आवाज आई है आपको लगता है. ओके, हम लोगों ने कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था. ठीक है. हम लोगों ने सॉरी क्लासिफिकेशन पढ़ा था. ठीक है. टुडे वी विल स्टडी द होमोलोगस सीरीज. ठीक है. होमोलोगस सीरीज. ओके, होमोलोगस सीरीज बच्चों, आपको पता है होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? जस्ट क्विकली बताओ होमोलोगस सीरीज क्या होता है. इफ यू नो प्लीज टेल मी. नहीं पता मैम. नहीं पता है. ओके, सो लिसन. होमोलोगस सीरीज क्या होता है? इट इज ए सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स. ठीक है. इट इज ए सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड. सिमिलर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड इट मींस इसमें जो सीरीज होता है, ये एक सीरीज होता है जो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप या फिर सिमिलर कंपाउंड्स के होते हैं एंड दे डिफर बाय CH2. ठीक है. सिमिलर केमिकल कंपाउंड, सिमिलर कंस्टिट्यूएंट विथ सिमिलर constituent compounds with या similar constituted compounds constituted कैसे similar compounds. Okay, which have similar chemical characteristics with similar, सब कुछ similar है इसमें, with similar chemical characteristics. ठीक है. तो वह डिफर क्या हो रहा है? बस डिफर बाय CH2. ठीक है. डिफर बाय
CH2. I will explain with example. Differ by CH2. ठीक है, C एक series होता है जिसमें similar constituent होते हैं, similar compounds होते हैं, similar functional group होता है and similar chemical characteristics होता है, but they differ by CH2. For example, अगर आपने मीथेन लिया CH4, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? ये अल्केन ग्रुप है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा, उसमें हम CH2 को ऐड कर देंगे। वी विल ऐड CH2, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप जो नेक्स्ट मेंबर इस सीरीज का होगा, नेक्स्ट मेंबर, उसमें क्या हो जाएगा? 1 C ऐड कर देंगे तो C2 हो जाएगा, और H में 2 ऐड कर देंगे तो H6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज हो गया। इसका नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? अगेन हमें CH2 ऐड कर देना है। मीन्स फॉर एवरी टाइम वी हैव टू ऐड प्लस CH2। ये ग्रुप सेम है, कंपाउंड का फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये हमेशा सेम रहेगा। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम रहेंगी, बट वो डिफर करेंगे सिर्फ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 से। ओके, अब आप बताओ कि C2H6 का नेक्स्ट मेंबर क्या आएगा? क्विकली बताओ बच्चों प्लीज। C3H8. वेरी गुड, C3H8, ठीक है, C3H8। तो जस्ट होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? एक सिमिलर कंपाउंड के सीरीज होती है विच जस्ट ईच मेंबर डिफर बाय CH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर जो होगा उसमें हम CH2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा C4H10, ठीक है। तो वट एवर द ग्रुप, आप कोई भी अल्कोहल ग्रुप ले लो, अल्डिहाइड ग्रुप ले लो, वट एवर ग्रुप, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम रहने वाला है, जस्ट उसमें CH2 हर ईच मेंबर में ऐड होगा। CH2 का मतलब क्या हो गया? उसका मॉलिक्यूलर मास 14 से बढ़ने वाला है, ठीक है। इसका पॉइंट में लिख लेते, हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दो Ni2, जो भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं, Ni2 कंसेक्यूटिव मेंबर, ठीक है, डिफर बाय member, just differ by formula of CH2 and mass of CH14, ठीक है। Any two consecutive member differ by CH2, ठीक है, and molecular mass of 14, ठीक है। हर एक मेंबर का 14 मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहने वाली है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज उनका जो फंक्शनल ग्रुप है, उनके जो स्ट्रक्चर है, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, वो सारे सेम है, ठीक है। दे हैव सेम फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास पे, उनकी साइज पे, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इसलिए उनका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, similar chemical properties but different physical properties, but different physical properties, different physical properties, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हो रही है? बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इज दैट क्लियर बच्चों? तो हम क्या देखेंगे कि इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड डेंसिटी, ये सारी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ईटीसी, ठीक है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है।
क्लियर है बच्चों? आप बोलो यस और नो। यस मैम। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपको सब पता होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज द ग्रुप या एनी ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कंपाउंड में ऐड हो जाते हैं और उसका फंक्शंस को चेंज कर देते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, व्हेन ज्वाइंड टू a specific manner is responsible for their characteristic chemical properties. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स आर व्हाट? दे आर responsible for their characteristics properties. ठीक है, और characteristic chemical properties, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो दे विल शो द अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टीज, राइट? फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन। Okay. Now the most important part is here, nomenclature. Nomenclature. Nomenclature of organic compounds. Organic compounds के अब हमें नाम, nomenclature। तो nomenclature क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रिवियल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। ट्रिवियल नेम्स, ट्रिवियल सिस्टम, that is also known as common names, common। एंड दूसरा होता है IUPAC, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हम फॉलो करते हैं एंड उसके बाद उसका नेम करते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ट्रिवियल नेम का कोई रूल नहीं है, नो रूल। ये जस्ट वो कहाँ से उनका जो सोर्स है, जिस सोर्स से वो मिलता है उसी सोर्स पे उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, बट ट्रिवियल नेम का कुछ हमें रूल्स नहीं पढ़ने हैं, बट आईयूपीएससी के कुछ रूल है, उस रूल्स को फॉलो करके हमें कंपाउंड्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखो आईयूपीएससी में तीन चीजें होती हैं। एक होता है रूट वर्ड, रूल्स, रूल्स टू ऑफ आईयूपीएससी। ठीक है, रूल्स में पहला रूल होता है रूट वर्ड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का रूट वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, और रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का हमें क्या देखना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, सेकंड चीज होती है उसकी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होती है? जो वर्ड से पहले लगती है। ठीक है, इसमें इसके अंदर आते हैं हमारे जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, या मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, लाइक दिस। ठीक है, तो प्रीफिक्स भी टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में आगा जैसे आपका बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हमें क्या जनरली आता है? बाई, डाई, बाई मिथाइल, डाई, सॉरी, ट्राई, लाइक दिस। ठीक है, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर साइक्लिक है तो हम लोग बोलेंगे साइक्लो, बाई साइक्लो, etc। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? सेकेंडरी में आता है ऐसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमोल, लाइक दिस। ठीक है, तो ये प्राइमरी के बाद लगाते हैं और रूट्स वर्ड से पहले लगाते हैं। इट्स लाइक क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, मिथाइल, इथाइल, etc। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट है सॉरी प्रीफिक्स। तो पहले रूट वर्ड देखना है, फिर हमें प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स में भी दो चीजें होती हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स।
प्राइमरी में आता है कि अब कोई भी ग्रुप अगर आपका है, कंस्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो वो कितनी बार आया वो दिखाते हैं बाई ट्राई करके, या फिर अगर साइक्लिक है तो साइक्लो बाय साइक्लो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है सफिक्स। अगेन सफिक्स भी टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में क्या हो जाएगा, प्राइमरी में अगर वो सब ऑल ऑल सिंगल बॉन्ड तो हम एन लगाएंगे, इन या फिर आई। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप का आता है। ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, एल्डिहाइड का अल, ठीक है, कीटोन का ओन, लाइक दिस। तो बच्चों ये आपके पास एक टेबल है या फिर मैं अभी लिख के दूं? यू हैव एनी बुक फॉर IMU CT और टेबल फॉर दिस सफिक्स? यस बच्चों, प्लीज रिप्लाई मी, देन रिस्पॉन्स करो फास्ट। You have the table of suffix, right? Yes, ma'am. Okay. So now we will proceed with the nomenclature. ठीक है। हम सीधे अभी अपना nomenclature स्टार्ट करते हैं। देखो उसका जो फॉर्मेट है वो ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाते हैं, IUPAC फॉर्मेट। ठीक है। वी राइट IUPAC फॉर्मेट। फर्स्ट वी विल यूज प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसमें क्या लगाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन वी विल ऐड रूट वर्ड, रूट वर्ड, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो वी हैव टू इसका फॉर्मेट यूज करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स डाई टाई ट्राई, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब आपके पास जो भी ग्रुप अटैच्ड है वो, प्लस रूट वर्ड जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है कार्बन का, देन प्राइमरी सफिक्स मीन्स अभी वो एन इन आइन जो वो भी है, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड। ठीक है। दिस शोज द फंक्शनल ग्रुप। ओके बच्चों, हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। CH3 CH2, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है। CHOH CHCl CH3। ओके, क्विकली बताओ उसका क्या IUPAC नेम होगा। हाँ बताओ बच्चों, जल्दी बताओ क्या होगा। पहले तो रूल नंबर 1 कंटिन्यूअस चेन देखना है। रूल नंबर 1 जो है हमारा दैट इज द कंटिन्यूअस चेन देखना है। रूल नंबर 2 देखना है कि इसमें प्रीफिक्स कहाँ पर है, तो ये हमारा प्रीफिक्स है और ये हमारा सफिक्स है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। रूल नंबर 3 नंबरिंग स्टार्ट करना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से नियरेस्ट लोकेंट पड़ता है। नियरेस्ट लोकेंट कहाँ से पड़ेगा, आप बताओ, लेफ्ट से पड़ेगा या राइट से पड़ेगा। नियरेस्ट लोकेंट पड़ेगा हमें राइट साइड से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, नो 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 नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है। नियरेस्ट लोकेंट कहाँ से पड़ रहा है, राइट से पड़ रहा है, लेफ्ट से पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ। फोर क्लोरो, फोर क्लोरो
6 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक है, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है तो अन। ठीक है, सेकेंडरी में क्या अल्कोहल है तो उसके लिए ऑल लगा देंगे, तो 4 क्लोरो हेक्सन, हेक्सन 3 ऑल। ठीक है, इस तरह से नेमिंग करते हैं। तो आपको कोई भी कंपाउंड मिले, आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है, उसके बाद उसमें प्रीफिक्स देखना है, सफिक्स देखना है, और नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहां से नियरेस्ट लोकेंट पड़ेगा सफिक्स का या प्रीफिक्स का। ठीक है, कर लोगे ना बच्चों, फिर प्रैक्टिस करना है या फिर मैं आगे बढ़ूं, एज यू टोल्ड टेल। बच्चों आप प्लीज आप बताओ कि इसमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है या फिर हम आगे बढ़े। मैम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे पास इस तरह के जिग जैग फॉर्मूला दिए रहते हैं। ठीक है, इफ यू आर गिवन लाइक दिस NH2, ओके, तो इसका जो नेमिंग होता है, जिग जैग का मतलब समझते हो आप, जिग जैग फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं, जिग जैग फॉर्मूला। इसमें कार्बन स्टार्ट होते हैं जहां पर इसका टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इस केस में इसका नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से नियरेस्ट लोकेंट पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज पूछना। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, अभी अगेन इसका IUPAC फॉर्मेट के साथ इसका नेमिंग करेंगे हम। तो इसका नेमिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सफिक्स, ये हो जाएगा प्रीफिक्स। तो हम क्या बोलेंगे, थ्री थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है अन, 3 मिथाइल हेक्सन, हेक्सामाइन। ठीक है, इसके लिए अमाइन यूज करेंगे तो हेक्सामाइन, हेक्सामाइन। ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सामाइन। चलो ओके, अभी जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़े से नेमिंग नेमिंग प्लेट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। चलो इसका बताओ, इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ जल्दी से। अच्छा, मैं कुछ कंपाउंड के नाम लिख दे रही हूँ। ठीक है, एक साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे। एक ये हो जाएगा, दूसरा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3। ठीक है,
ओके चलो आप तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस बताओ मुझे क्या होगा इसका। वन मोर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये वाला था इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हम उसको नंबर देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जस्ट टेल मी, फर्स्ट टेल मी द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड 1। यस किसी का हुआ बच्चों बताओ। देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हम इसका नेम स्टार्ट कर नंबरिंग करना शुरू करेंगे फ्रॉम द, हमारे पास यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, वी हैव टू प्रीफिक्स हेयर, वन मिथाइल एंड ये ये वाला एक है और एक ये। ठीक है, वी हैव वन मिथाइल एंड अदर टू मिथाइल्स। ओके, तो उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वी हैव डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज सफिक्स, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, और ये दोनों प्रीफिक्स है। तो नंबरिंग हमेशा लोग क्या है, उसको प्रिफर करते हैं जहाँ पर कुछ सफिक्स होता है। ठीक है, तो हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम दिस कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये कार्बन नंबर 3। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 3 3। जिस भी कार्बन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है या प्रीफिक्स सफिक्स होता है तो उस कार्बन को हम उसके नंबर से शो करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर सफिक्स है, प्रीफिक्स है 1, कार्बन नंबर 1 पे, 3 पे एंड 3 पे। तो 1 3 3 डैश ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 बार मिथाइल ग्रुप है, ट्राई मिथाइल। ओके, ये हो गया एंड देन ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, और उसके बाद ये साइक्लिक रिंग है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन से हैं, 6 कार्बन से हैं, तो साइक्लोहेक्स। ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो इसका हो जाएगा हेक्स 1 ई। ठीक है, तो 1 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ई। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 2 की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और एक ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब हम प्रीफिक्स को लगाते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, तो इथाइल और मिथाइल में पहले क्या आएगा, मिथाइल आएगा। ठीक है, अब इसका नेमिंग करेंगे तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 1 2 3 4 5, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो क्या दोनों तो बराबर ही हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 9 कार्बन। ठीक है, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, पहले हम इथाइल पे लगाएंगे, तो 5 इथाइल, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, 5 इथाइल। ठीक है, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, कितने ग्रुप में कंपाउंड कार्बन से 9, तो हम क्या बोलेंगे, 5 इथाइल 4 मिथाइल नॉन। ठीक है, 9 कार्बन है, नॉन किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 4 पे, तो नॉन 4 ईन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 3 की बात करें तो हम इसका क्या हो जाएगा, किसने किया बच्चों, आपने किया इसका नाम, तो इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, इसका लॉन्गेस्ट चेन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू सी द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, अब इस चेन में ये वाला जो ग्रुप है वो हो गया प्रीफिक्स। ठीक है, और ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, रिमेम्बर दिस, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4,
यहाँ से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो जाएगा 4 मिथाइल 4 मिथाइल 4 5 6, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 4 मिथाइल हेक्स, ठीक है। और कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 - I, ठीक है। बच्चों क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, इसका जरा नाम बताएंगे आप, कंपाउंड नंबर 4 का? कंपाउंड नंबर 4 का प्लीज बताओ। आप बताओ कुछ, आपकी तरफ से भी इनिशिएट करो। किया आपने बच्चों? यस बताओ, अक्षित, अनमोल, आर्यन, अथर्वा, जयान, हैव यू डन दिस? नहीं हुआ बच्चों? ठीक है, देखो क्या होगा, हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 3, ठीक है। 3 पे 2 ग्रुप्स है, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, ठीक है। साइक्लो है क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है और कोई एरोमेटिक नहीं दिख रहा है, तो डाई मिथाइल साइक्लो साइक्लो हेक्सानॉल, हेक्सन, और ऑल किस ग्रुप पर है? कार्बन पर है, 1 पर, साइक्लो हेक्सन 1 ऑल, ठीक है। 3 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सन 1 ऑल, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है या फिर अब आगे बढ़ना है? आप बताओ, अगर क्लियर हो गया तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ बताओ, अगर हम और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इफ नॉट, अगर हमें टाइम को ज्यादा वेस्ट इसमें नहीं करना है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। आप बताओ, आपका क्या इनपुट है, आउटपुट है? मैम आप आगे बढ़ो। ओके, तो नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया ना? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपोजिशन कंपोजिशन एंड फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन क्या है, और इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकालते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन एंड फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपोजिशन एंड फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट है, इसका एक फॉर्मूला है परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है, इज इक्वल टू mass of the element upon total mass of compound into 100. Yes, हाँ, तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड
total mass of compound multiply by 100. ठीक है, ये किसके लिए है? इन 1 मोल, इन 1 मोल। ठीक है, तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंट कम, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे मोटे, तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा? उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास अपॉन उस टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 फॉर 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दो चीजें होती हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो of all elements present in the compound, of all elements present in compound। ठीक है, it is the simplest whole number ratio of all elements present in a compound। एक compound के अंदर जितने भी elements हैं उन सबका जो simplest whole number। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास C6H12O6 है। ठीक है, तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? CH2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। करेक्ट है, तो नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो एक्चुअल नंबर, ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और ये सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, actual number of all elements present in a compound, present in one molecule। करेक्ट है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सिंपलेस्ट नंबर, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर। ओके, so now molecular formula is equal to molecular formula is equal to empirical formula multiply by n। ठीक है, या होल n, empirical formula, ठीक है, होल n। ठीक है, एंड n इज द, n क्या हो जाएगा? n इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, it is the structural formula of an atom and their distribution system in the molecule of a given compound। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हमें बताता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, empirical formula, molecular formula and structural formula। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, it informs about the functional group।
ठीक है। तो हमारा ये जीओसी चैप्टर आज ओवर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, टुडे आई विल आस्क, मैं जस्ट सिंपली क्वेश्चंस आस्क करती हूँ कि हमारे पास अभी स्प्लिट स्क्रीन नहीं है, बट मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको आंसर करना है। ठीक है, यू हैव टू आंसर, प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन इज, ठीक है, लेट मी राइट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, इन अल्केन, अल्केन्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है sp, बी ऑप्शन है sp2, सी ऑप्शन है हमारा sp3 एंड डी ऑप्शन हो जाएगा sp3d। चलो बताओ, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? कर गए? sp3। क्या होगा इसका आंसर? sp3। यस, sp3, गुड। ठीक है, ओके, अभी आपका फिफ्थ क्लास होता है ना, इट्स फिजिक्स टाइम।
Hello, ma'am. Ma'am, are you there? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ओके, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था। सर, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने केप्लर्स लॉज पढ़े थे, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। इसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ग्रेविटेशन कंटिन्यू। चलो, तो आई विल ओपन दैट फाइल। In the previous lecture, I told you about first law, second law, and third law of Kepler. Then we have done with the gravitational law of universal law of gravitation, Newton's law. अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कवर करना है हमें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको कहते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, जब भी बॉडी को हम लोग ड्रॉप करेंगे, सपोज दिस इज अ प्लैनेट, दिस इज द प्लैनेट, एंड ऑन दिस प्लैनेट वी आर ड्रॉपिंग अ बॉडी। एक बॉडी लिया हमने, दिस इज अ बॉडी, इट इज गेटिंग ड्रॉप। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो बॉडी होगी वो अट्रैक्ट होगी, वो अट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? उसके अट्रैक्शन की वजह से बॉडी इज गेटिंग एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन डेवलप होती है। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, due to force of gravity, the body is getting accelerated. The body acquires acceleration. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Due to the force of gravity, the body acquires some acceleration, and that is called as acceleration due to gravity. बोलो, याद रहेगा बच्चों? जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर यू गेटिंग दिस? आपको ये ध्यान रखना है, फॉर अर्थ, अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको ये भी बता दो, मून के लिए, मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 9.8 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो अर्थ पे है उसका 1/6 है ना, मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये जितना भी वैल्यू आता है 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, देख लेना, 1.34 समथिंग कुछ तो भी आता है। तो ये ध्यान में रहे कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ का 1/6 है। ठीक है, याद रहेगा बेटा? अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन एज वेल एज प्लैनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। सबसे पहला पार्ट मैं लेता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, है ना। अलग अलग पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होता है। ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट,
ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट पर अगर आप सरफेस के करीब हो और नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। व्हाट इज एम? एम क्या है यहाँ पर? एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, उस प्लैनेट का मास होगा, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब देखो ना, मास ऑफ द प्लैनेट, हर प्लैनेट का मास अलग अलग होता है, तो क्योंकि हर प्लैनेट का मास अलग अलग होता है, तो अभी हर मास के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। हर प्लैनेट का साइज और रेडियस भी अलग अलग होता है, therefore every planet will have different acceleration due to gravity, and that can be calculated using this formula. Will you remember this formula? Okay beta, you have to remember this formula. Acceleration due to gravity on the surface of the planet will be given by this particular formula. नेक्स्ट जाते हैं, अगर आप ये प्लैनेट ले लिया, प्लैनेट से, अभी प्लैनेट है ये, इस प्लैनेट से आप एट हाइट पर हो, आपकी जो बॉडी है, कंसीडर दिस इज द बॉडी, एंड दिस बॉडी इज ड्रॉप नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट बट अबव द हाइट एच। यहां से ड्रॉप करते हैं, ये देखो, ये हाइट एच है ना, हाइट एच, ठीक है। इफ द तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, यानी कि हाइट एच पर। हाइट एच पर इसका फॉर्मूला हो जाता है, मतलब इसको डिनोट करते हैं हम लोग, हाइट एच के लिए इसको जी एच से डिनोट करेंगे बेटा। किससे डिनोट करेंगे? जी एच, जी एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, ध्यान से समझना। जी एच का पहला फॉर्मूला लिखूंगा मैं, जी टाइम्स वन प्लस, सॉरी वन माइनस टू एच बाय आर, और जी एच का दूसरा फॉर्मूला होगा जी टाइम्स आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। अभी ये दो फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट के दो फॉर्मूले हैं, आपको ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। दोनों फॉर्मूले कहाँ से, इसके डेरिवेशन में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो ताकि अपने को न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाए। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये ध्यान रहे। ये फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा वो तब यूज करना है इफ एच इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। जैसे आपको पता होना चाहिए अर्थ की हाइट कितनी, अर्थ का रेडियस कितना है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ये भी लिख देता हूं मैं। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? हमारी अर्थ का रेडियस है बेटा 6500 किलोमीटर, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। और अगर हम थोड़ी सी हाइट पर जाते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो 2 किलोमीटर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। So therefore, if the height of the height gained by the body is less than, very small compared to the radius of the earth, then we can use this formula, and this formula is based on some approximation. Remember बच्चों, ये formula based on some approximation है, तो ये formula हम लोग use कर सकते हैं। This is very simple to calculate. लेकिन अगर 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 हमें height काफी ज्यादा दिया हुआ है, height is comparable with radius of the earth, then approximations will not be allowed, and that time we have to use this formula, that is accurate formula. ये ज्यादा accurate formula है, याद रहेगा। तो अगर हाइट की वैल्यू काफी स्मॉल होगी, h is very small, then we can use approximate formula. If h is comparable with radius of the earth, यानी कि हाइट की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, दैट टाइम वी हैव टू यूज द एक्यूरेट फॉर्मूला, दैट इज जी टाइम्स आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। चलो बच्चों, याद रहेगा, विल यू रिमेंबर दिस? तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, एक और है बिलो द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। व्हेन वी आर बिलो द सरफेस ऑफ द प्लैनेट देन उसको कहते हैं डेप्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस, जिसको हम लोग जीडी से डिनोट करेंगे। जीडी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, डेप्थ में चले गए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने ये प्लैनेट ले लिया, ठीक है बच्चा, आपने अगर ये प्लैनेट ले लिया और इस प्लैनेट का मास m है डेफिनेटली, और आपकी बॉडी यहाँ पर है, देखो भाई डेप्थ में है, डेप्थ में, दिस इज द बॉडी। ये सेंटर ऑफ द प्लैनेट है और ये इसको मैं ले रहा हूँ डेप्थ डी, तो जरा ध्यान से देखो, ये डेप्थ डी हो जाएगा, ठीक है, डी फॉर डेप्थ। तो आपकी बॉडी यहाँ पर है और मैं बता देता हूँ आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लैनेट और बॉडी तक का दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी बताओ, ये दूरी बताओ। ये दूरी बताओ कितना हो जाएगा, ये आर माइनस डी, विल इट बी आर माइनस डी? यस डेफिनेटली इट विल बी आर माइनस डी। तो आर माइनस डी डिस्टेंस पे अगर आप ये हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी? तो जीडी का एक ही फॉर्मूला है, आपको ज्यादा फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, एक ही फॉर्मूला है, जीडी का फॉर्मूला है, जीडी इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर। दिस फॉर्मूला विल डेफिनेटली बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। एक चीज याद रखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज लेस देन जीडी, इज ऑलवेज लेस देन जी, ऑल्सो जीएच इज ऑल्सो लेस देन जी। मतलब जैसे जैसे हम हाइट एच पर जाते जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटते जाएगा, और जैसे जैसे हम डेप्थ में भी जाते जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटते जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ as well as acceleration due to gravity decreases with height. That means acceleration due to gravity is maximum on the surface of the planet. ये बात लिख देता हूं मैं, acceleration due to gravity decreases with increase in depth. Acceleration due to gravity decreases with increase in height. Therefore, acceleration due to gravity is maximum on the surface. ठीक है बच्चों, तो ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एज वेल एज डेप्थ। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। उसी के साथ साथ आप सबको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है वो स्पिन हो रही है। अवर अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अवर अर्थ इज रोटेटिंग, ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग। इनफैक्ट सपोज कोई भी अगर प्लैनेट है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारी अर्थ ही ले लो बेटा, अर्थ क्योंकि रिवॉल्व हो रही है, रिवॉल्व हो रही है ना, तो कहां से रिवॉल्व हो रही है पता है? अबाउट पोल्स रिवॉल्व हो रही है। देखो द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन पासेस थ्रू पोल्स। मालूम है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल से पास होती है, दीज आर द पोल्स। और इसका इक्वेटर कहाँ होता है मालूम है? दीज आर द इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है ना अर्थ का। तो क्योंकि ये स्पिन हो रही है ना, रिवॉल्व हो रही है, तो जब भी आप अर्थ को रिवॉल्व करवाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ का शेप देखो ऐसे हो जाएगा, इट इज स्लाइटली एलिप्टिकल। मतलब अर्थ ऐसे फैल गई है। कहाँ फैल गई है बेटा? इक्वेटोरियल पॉइंट पर अर्थ फैल गई है। आप और ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, ड्यू टू दिस सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट एट पोल्स एंड एट इक्वेटर। मतलब ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटोरियल रेडियस इज मोर देन पोलर रेडियस। और पता है इसमें फर्क कितना है? रेडियस ऑन द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट द पोल।
बाय अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर से ज्यादा है ये। मैं इसको मैथमेटिकली लिख के बताता हूँ। रेडियस एट द इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट द पोल। और बताओ बच्चों, हमने हमने ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर, बराबर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, करेक्ट है। तो जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां पर ग्रेविटी कम हो जाएगी, और जहां पर रेडियस कम है वहां पर ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पोल इज लेस देन एक्सेलरेशन, सॉरी पहले इक्वेटर लिख देता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स पोल। लेकिन इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, मैं इसकी वैल्यू भी लिख के बताता हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑन द इक्वेटर, और पोल्स पर इसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखो बहुत स्लाइड का डिफरेंस है, ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, मतलब आपकी अर्थ पर आप कहाँ पर होते हो, आप आपकी अर्थ पे पोजीशन के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर लिखना ज्यादा सही रहेगा, स्लाइटली ग्रेटर एट द पोल देन इक्वेटर। ठीक है, ये ध्यान रहे। देखो दो बातें बताया मैंने, रेडियस की वैल्यू इक्वेटर पर ज्यादा है लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर कम है। तो ये दोनों बातें एक साथ याद रखो, आपकी किताब में ये बात लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं कि बाउंसर जा रहा है बेटा, जरा मुझे बताओ, समझ रहे हैं ना? यस सर। ओके, नाउ यस, नेक्स्ट अब आपको नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, नाम से ही जाहिर है एस्केप होना। अभी जैसे एग्जांपल, मैंने अगर एक प्लैनेट लिया, बात समझ रहे हैं, दिस इज अ प्लैनेट, इस प्लैनेट के सरफेस से मैं एक बॉडी को थ्रो करूंगा। देखो कंसिडर यहाँ एक बॉडी है, इसको हम थ्रो करेंगे। तो अगर इस बॉडी को मैंने v वेलोसिटी दे करके थ्रो किया तो ये बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ऐसे वापस आ जाएगी ना। इट विल नॉट एस्केप द अर्थ प्लैनेट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। दिस वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी इज वेरी स्मॉल, इट विल नॉट एस्केप, ये रिटर्न बैक हो जाएगा। तो मैंने ऐसे मिनिमम कितनी वेलोसिटी देना है कि ये एस्केप कर जाए। मैं अगर इस बॉडी को अगर वेलोसिटी वीई दे देता हूँ, वीई यानी एस्केप वेलोसिटी। वीई का मतलब क्या होता है बेटा? एस्केप वेलोसिटी। तो अगर एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज लॉन्च्ड एंड इट विल नेवर कम बैक टू द अर्थ, इट विल एस्केप, ये एस्केप कर जाना चाहिए। तो उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी। देखो लिख के बताता हूं, मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी ड्यू टू विच इट escapes अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अर्थ या फिर प्लैनेट्स लिख सकते, प्लैनेट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो इसका भी प्रॉपर फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला बता देता हूं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वीई इज इक्वल टू अंडर रूट जीएम अपॉन आर, सॉरी अंडर रूट 2 जीएम बाय आर, अंडर रूट 2 जीएम बाय आर। अगेन मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज एम। एम क्या है बेटा? मास ऑफ द प्लैनेट है, नॉट मास ऑफ द बॉडी। हाँ, मास ऑफ द प्लैनेट है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। तो ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। देखो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ हेवी द प्लैनेट इज, बिकॉज प्लैनेट इज अट्रैक्टिंग द बॉडी, therefore प्लैनेट के मास पर ये डिपेंड करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, सबको समझ में आ गया?
तो प्लीज रिमेम्बर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक हार्ट बना देते, ठीक है। हार्ट इसलिए बनाते हो ताकि ये आपके दिल में जाए। देखो ये फॉर्मूले को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। √2 GM/R है ना बेटा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, R से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, चलता है। जब हम R से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये देखो इस तरीके से दिखाई देगा, ये फॉर्मूला इस तरह से दिखाई देगा, 2 GM/R² इंटू R। तो इस वाले GM/R² को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ पता है, ये जो GM/R², इसको स्मॉल g पुट कर सकते हैं ना। देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी का नया वर्जन बनेगा √2 GR। दिस इज द अनदर वर्जन ऑफ द सेम फॉर्मूला, अनदर वर्जन ऑफ द सेम फॉर्मूला √2 GR। बोलो बच्चों याद रहेगा। और एक बात याद रखो, एक लास्ट बात याद रखो, ठीक है ना। एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट अर्थ, हमारी प्लैनेट अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी है? प्लैनेट अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया है, इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो मैं किलोमीटर पर आवर नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, किलोमीटर पर सेकंड कह रहा हूं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, एस्केप वेलोसिटी फॉर आवर प्लैनेट अर्थ इज 2 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी विच विल बी देयर फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्विंग। बस इतना ही टॉपिक है, इसके अलावा कुछ भी टॉपिक नहीं है बेटा। इसके अलावा अब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। बोलो सबको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो अभी मैं बुक ओपन करता हूँ। हम लोग बुक ओपन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब तक आप ये लिख लो, let me open the book। हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? नो सर। एक मिनट ना, मैं ज्वाइन हो रहा हूँ शायद। 969 1
हेलो सर, मुझे जरा ये होस्ट बनाते क्या? हेलो सर, मुझे स्क्रीन शेयर करना है, होस्ट बनाते क्या आप? तो क्या बोले आप? MIT बेटा, सर को बोलना पड़ेगा ना, मुझे होस्ट बनाओ। हेलो हेलो बच्चों, सर का नंबर है क्या आपके पास? नो सर। कौन से सर का सर? अभी मैं एग्जिट हुआ तो देखो यहाँ का होस्ट खत्म हो गया, होस्ट। सर कौन से सर का नंबर? मैं स्क्रीन ही नहीं शेयर कर पाऊंगा। सरफ मैम का नंबर है। क्या बोल रहे हैं प्रकाश, क्या बोल रहे सरफ हैं मैम, सरफ मैम का नंबर है। बेटा? एक सर को पिंग करो जरा, एडमिशन टीम, प्लीज मेक मी होस्ट। हेलो शायद सर सुन नहीं रहे। हाँ ठीक है, 4 मिनट बाकी है बेटा सिर्फ, तो इसको हम लोग कल ही देख लेंगे फिर। अभी मैं ओके। स्क्रीन शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ। सर नोट्स। मैं आपको नोट शेयर कर देता हूँ। टुमारो वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, बेस्ड ऑन दिस वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा? सर। ठीक है, ओके सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हेलो, समझ में आया कि नहीं यस सर। सबको? यस सर।
हेलो सर। हेलो सर।